पाँच महीना वापस करना है। क्लास पार्टी करते काहीतरी ऑब्जेक्ट पण टाकत काम करतो आणि यांच्याकडे फोन पण आहे आईचा फोन कोणाची काय माइंड आपला कॅमेरा चालू आहे बाय यूज ट्रॅकिंगवर मॅम सॉरी प्रँकी करेल सॉरी dance like this. I don't know that stuff now. What's up, that? Salsa करता रस्ते तो salsa है ना salsa ये हा दृष्टी नाही वाटत आता आता हा नाही ना ठीक आहे हा दृष्टी नाही वाटत दूसरा वाला पेपर
तो last of the elect wait fast your sonada तू कौन होता है बोलने में फिर भाई मैडम एक लेक्चर मैडम ही दूसरा है काला जूस बोल देना तेरा कुछ करो मुझे बसता था भाई दो दिन असली कसर तो बाकी है शायद दे दे माने जो कितने लेकर आ सामने लोग का मेरे लोग का बस आप लोग प्लान नहीं कर क्यों नहीं रहते करता बोलना मत दिए साइड निकलने बस ये नहीं रोड बस आई proud of you अरे नहीं ए अरे सारा करना अरे ए मुझे चिंता मत नहीं भाई क्या करता है नहीं 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 मैं थोड़ा सा बंद करूं तुमको पता है मैं किसी कसम दूंगा एक कसम बैंड भी बंद कर देखो फिलीपीन इतनी साइड बोल रहे बैग को मतलब बैग किससे गर्मी हो रही तो नहीं करना है अबे मैं एक फैन क्यों बंद कर फैन बंद कर बस तो का फैन होता है
एकदम fast, एकदम fast. मैंने नहीं रखा है, बस कैमरा पे रिकॉर्ड कर दिया बात. बात की मैं Hey guys, shall we get into the theory part or still math you need to do? Right. What was the chapter I was doing? Natural vegetation dynamics. Give me a volume. I'll do the maps also. Last 5-10 minutes we can. Look here. Interpretation, soil, natural vegetation. I remember what is left. Which forest was the last forest that I completed? Evergreen and deciduous complete. Mountain. The complete mountain. And the chapter is complete. Okay. फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सोशल एंड एग्रोफॉरेस्ट्री इज नॉट देयर इन द सिलेबस. Put the question for forest conservation. Write down the question. Explain. I'm giving directly question answer and I'll explain also. Explain the meaning of forest conservation. Explain. I kept the water bottle somewhere here. No. Meaning of forest conservation. Question mark. Oh. List out several measures of. List out. Back to the segment of the several measures of forest conservation in India. Forest conservation in India. That's the answer. I'm giving the meaning. Nobody went out now for playing. Sure. Okay. कौन ये खुद ही गया. हमको रियल सर्वर को फंसा रहे पसीना नहीं है एसी में बैठे पसीना नहीं. नहीं फंसा हुआ कौन है वो मुझे मालूम नहीं है. फंसाना कौन है वो पता है. Right now, it simply means deliberate planning. It simply means deliberate planning. And practice of maintaining
forested area benefiting sustainable development. Benefiting sustainable development. So this is the meaning I'm giving in simple lines as well. My own simple. It simply means forest conservation. It simply means government measures at government measures at regional and national level. Government measures at regional and national level to maintain and to enrich the forest car in this forest car in following are the main measures. New para. Following are the main measures. Now, out of the two, which one you feel easy? First one. How about the second one? First of all, if I ask you the question, do you need forest conservation? Yes. Why? हम लोग तो forest में नहीं रहते ना. Why do you? What is forest conservation? दो meaning है. एक first meaning, which is from the volume and the textbook. Second one that I have made of mine. Why does it Hey, what is conservation in need for today? It's like how many students are here today? 18, 20. All eyes are focused as if I'm going to act. No, I'm looking at you guys. 2 each, na? 20 to 40 eyes. Bolo. 28. I was watching some in between while I was having my small brunch or lunch with wallet. What India and Pakistan are all about. And very soon we are expecting fireworks, Deepavali celebration in our neighboring country. And this term it should be Haliyat made out in pocket में लाएंगे. I hope कि एक दो दिन में मोदी की कुछ करे तो है ना मजा आता है. चलो आप लोग को बोलो फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या होता है? Come on, what is the dead silence first? So that is one of the measure, man. What do you mean by forest conservation? What is forest conservation? अरे उधर है देख के रीड करके बोल सकता है. Hey, let me tell you one thing. In my lecture only I ask maximum questions, na? To you. Yes. And what about the other lectures? Maths. What the formula है theory wise है ना? RSM, very good. Very strict also with you. Good. Too strict. Rahul na? Rahul said so. बोलिए. He is my age group, so we call by the name. What that? Biology is not taught by Rahul. You fail in biology if it is taught by him. Come on. Look, very simple. We require fresh air. What does that fresh air means? बच्चा बोलता अभी यहाँ से घर जाएगा ना पापा ने नया यूज़ लगाया. Is that fresh air? then पहले मैं घर पे बोलेगा मम्मी कुकिंग. पहले सब लोग निकलो बाहर. No cooking, nothing.
है ना? Normally put in silent. So we believe only one thing. लेकिन क्या बोला? Good boy. You generation should be enjoying your life with minimum health issues. What is the first health issue? I'm asking to you. पहले बोलता 4 लेक्चर अटेंड करने के बाद मेंटल हैंगओवर 4 घंटे से भी ज्यादा है. What else? अरे एनवायरमेंटल इशू बताओ. टीचर वाला इस इशू नहीं बोल रहा. तो वैसे हमको भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है. आप लोग कैसे तो वो कभी पूछा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. हाँ, अस्थमा है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. What is that? सांस के काम करते हैं. अरे उसी का अस्थमा बोलते हैं. आगे जाएगा ऐसा डॉक्टर बनेगा पेश मर जाएगा. एंड वो नीचे लिखा है सत्यवादी हरिश्चंद्र. That is due to something else. Now the most important issue, as she said, pulmonary diseases. Pulmonary मतलब वही है. And what else? चलिए अभी जो कोरोना हिट कर रहा है. Question, my students, do you think exams will be cancelled? Yes. 110% no. Right? Because हम लोग ने बोला कोरोना निकल जाए जल्दी. मोदी का कंट्रोल कोविड के ऊपर भी है. चाइना ने बना दिया. पहले तुझे एरिया पर टेस्ट करने की. Hey guys, one thing is very sure, when we talk about conservation, जो already अपने पास है पहले उसको बचाओ, है ना? फिर enrichment करो. What happened? What happened? Who has signed? क्या हो गया? Hey, what is the problem? इधर दो. क्या issue है? कौन? Who? Tell the name. आर्य करके बच्चे steps. So we believe that you guys have the right to have a colorful and a safe environment. Because I have seen when we are moving out of Mumbai, some part of Maharashtra, some part wherever you go, you feel environment is very lively. What does that lively mean? So the air is not polluted. I cannot say very fresh, non-polluted. I mean, I think with the weeks of this rainfall, we have a small group. So we start with Lonavala, Khandala, which is very small for us. I remember going one day to that Malshes Ghat, that also late night. And then this waterfall, Nashik mein hai, bahut andar hai. Ashoka waterfall. One of the best waterfall ever I've been. And that water falls on you, you feel some 10-15 people are drinking a tea. So I was one person who was standing at that waterfall. A local guide रहता. तो क्या मराठी में दबदबा बोलते हैं. So he told me, sir, कालसी एक कुछ तो बोला था. And I asked my friend, वो क्या बोला? अरे पत्थर भी गिरेगा वो first निकलो. And the waterfall is more like something like I don't know how to explain. And I was continuously standing, it was falling on this part, which was really massaging or soothing type feeling. And that water also, when it falls and takes you, if you are unable to hold the ground, you will be found the next day only somewhere down. It's very dangerous. But somehow I was riding long time, so I want to enjoy that. Then coming back, Nashik se फिर हम लोग जैसे enter किया, then again that pollution, है ना, traffic jam. So we want to stay there for a long time, but then we have the work of coming and teaching you guys. Then you guys also take a break. अभी ये break गया, I don't know where she has gone. We always believe the students must have this mental relaxation, very important. And mental relaxation बोलते कुछ नहीं सर, आप कुछ भी बोलो मैं तो सोता है. And science has proved sleep doesn't give you any mental relax. मालूम है? आप लोग में कौन है जो बोलता है कि मैं सोता है तो मुझे आज तक कोई भी ड्रीम्स नहीं आया है? सबको आता है ना? You know what are dreams exactly? What are dreams? किसी ने नीचे लिखा ऐश्वर्या राय आती है सर वो ये. हमारे ड्रीम में कौन आता है वो नहीं पूछ रहा हूँ. What is a dream? वो पता नहीं है. मैं अभी कोई लेटेस्ट एक्टर्स मुझे मालूम नहीं है. हाँ, morning till night
you do many activities. There are certain activities we do incomplete, and 110% you will get that dreams only. And a girl or a boy at this age, अभी dream में क्या सर आप अभी country के बारे में तो मत पूछो. And teacher definitely no, सब बढ़िया है उधर. And girls का dream अपनी जगह पर, boys का dream अपनी जगह पर. The next morning you get up, the first thing that you need to tell your mother, I got a lovely thing. मैंने बोला कौन आया? पहला क्वेश्चन यही रहेगा, कौन आया? पापा, मम्मी, क्यों बार बार वही? टीचर, वो तो मैं रियलिटी में भी नहीं देखता हूँ, सो जाता. Then hey sir, X factor is sir. And girls might say, sir, Y factor is sir. So next day we feel the whole morning till afternoon the girl and boy is in that same mood only. पर जब मैडम ने आके पेपर आपके हाथ में दिया, क्लास टेस्ट, out of 40 you get only 0, 4 तो गायब है. और वो लड़की भी देखो, मैडम you have forgotten to put 4 here. उतना ही मार्क्स मिले थे. And then the dream shattered. तो फिर मैं एक प्रोडक्शन हाउस के साथ अभी जुड़ रहा हूँ. They are doing some lecture related work. तो ड्रीम हाउस का नाम क्या है? Shattered Production. एंड वो ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्टर, 60 mm में मैं ओपन कर रहा हूँ. मतलब किधर है ये तो 2 mm. अरे छोड़ो सर आप आगे चलो. और स्टोरी ओपन होते एक टीचर आ रहा है, मतलब वो तो मैं ही है, बट स्टूडेंट कोई नहीं आता. ऐसे मेरा इंसल्ट कर रहा है या पिक्चर? एक ही बात है, एक ही बात है. So then we say, what is that which plays in your mind? Whatever videos I have shown, it is always stuck in your mind. I'm standing and delivering my lecture to the max of the max interest. वो colorful नहीं है, black and white. ना correct है. But sir, आपने जो video दिखाया ना, I will never forget. And there is a connection. This brain captures that picture. Whatever told in that only captures. पर क्या बोलते हैं, आजकल मैं दूसरा टाइप का पिक्चर देखता हूँ, आप जरा बीच में मत आना. तो देखता है. It's okay, it's okay. We always believe that forest मतलब हमारा घर का बालकनी. सर बालकनी में कहाँ से हमने फोटोज ग्रो किया? 4 potted plants रखा है, और मैंने देखा कुछ elderly ladies have a park in their house. बैठने के लिए जगह नहीं रखा है. मतलब भाई साहब जरा हट के बैठे, बोले क्यों? उधर 2 पौधा आ रहा है. यार ये क्या है, घर है कि जंगल है? नहीं सर, ग्रीनरी हमारे घर में है. कहाँ से? लिविंग रूम से. वो कोपर के नाम एक मेरा एक फ्रेंड है, शी इज अ टीचर. The whole flat is full of potted plants. मतलब आपके बच्चे और हस्बैंड कभी कभी बोलते हैं तू प्लांट के साथ रहे, हम दूसरा प्लांट लेके जाए. फिर जगह तो दे. एंड वन मोर थिंग आई टेल यू, दिस टुडे फॉरेस्ट कंजर्वेशन है ना, ये हमारे मिनिस्टर्स लोग आते हैं. जैसे आई रिमेंबर मोदी जी केम टू दैट अटल सेतु opening, not reopening. I was working from that college and I was coming. The whole life I have not faced the traffic jam on that day. Twice I was with the bike, this bike only. With the bike I was down somewhere. Traffic police itna. Jab Modi ji literally came, the road was flashy, green kind. Potted plants लगा है, क्या नहीं लगा है. So I was praying the heart of it. मोदी जी जैसा कोई मिनिस्टर हर 2 महीने में एक बार आए. पूरा रोड को लोग ने सिर्फ 2 या 3 दिन में चकाचक बनाया. फिर 2 हफ्ते के बाद देखा वही खड्डा है, ये इधर चला रहा है, उधर. वो पूरा जेएनपीटी का रोड है, यू नो दैट, एंड इट इज वर्थ नॉट गोइंग देयर. ट्रक्स वाला तो हमको ऐसा लेके जाता है जैसे कि क्या है भाई, कैसे चल नीचे आ जा, मैं जा रहा हूँ. अरे मुझको it doesn't even care, ना इंडिकेटर, नथिंग, इज कमिंग लेफ्ट एज इफ, एंड आई एम शाउटिंग, क्या आंख दिख रहा है क्या? नहीं तू छोटा है ना, नहीं दिखता है, मैं देखती हूँ. So big vans and big trucks are there, and my punching inside that college is 7:55, and I start my ride from my house. अगर जल्दी निकल गया तो 6:40 या 6:45, लेट हुआ तो 7 o'clock, and 7:45 या 52 के अंदर रहना, and पनवेल से भी 9 किलोमीटर है. And I tell my staff that I come with, हाँ सर आप जिंदा रहो सर. मतलब कुछ हो जाएगा तो हमको कौन देखेगा? So means what? Entire area of that Navi Mumbai airport, if you see, it was full of mangroves, full of mangroves. Now you go to see, no man, no growth, nothing. Also,
And already this Indigo, I think Indigo Airlines has announced they are the first commercial flight to take off from Navi Mumbai. कब take off होगा वो अभी तक डेट नहीं बता, but होगा कभी ना कभी. August बोला है, August. So what is conservation? Look the word. It is practice of maintaining forested area and ये कौन सा development है? For you and me? No sir, it is for future generation. Are we compromising our needs? So what is the biggest compromise you have done till date? All the taking admission in the school. And where will you get the admission? Sir, wait, sir, after 10th, we will let you know. What is that? So that is my real life stuff. And to be very frank with you, I do some little bit of admission work, not here, some other person. I tell the parents very simple. 10th ka jo mark sheet hai na, only for 11th and 12th admissions. And then for the 12th mark sheet, decides your career. बच्चा अच्छा ये सीक्रेट ना पेरेंट अभी तक नहीं बताया मुझे. ए भाई तुझे अगर 11th 12th का साइंस में जाना, you should get the percent which I got it in my area 98.87 and my name was reflecting in the third list. मैंने बोला ये कॉलेज के पे तुम. And those who are 43 44 they were in the first list. And वो मुझे पूछ रहे तू इधर कैसे, मतलब मेरा छोड़ तू इधर कैसे, वो तो मैं कोटा में अंदर घुसा है ना. मतलब कौन सा कोटा है भाई, SC/ST है, मत बोला बाहर किसको. Scheduled caste and scheduled tribe. I used to pay in those days 3 months 12,000. Used to pay only 3,500. वो भी रिटर्न मिल जाता था. And I used to get the railway pass going to Dadar second hand. And these guys used to get first class passes. And उसको 97 rupees भरना था रेलवे के लिए और मैं भरता था 350 rupees and second class. And ऐसा भीड़ में लटक के जाने का दादर. I never forget all these things because कॉलेज लाइफ है सर. स्कूल लाइफ में सोचा हमारा बच्चा यहाँ से कोलाबा जाता है पढ़ने के लिए, रिटर्न आते समय भी सोता, अब जाते समय तो वैसे भी सोता. हाँ, my friend works in army school in Colaba, which is far inferior, or that is CUC. So when we talk all this length and breadth of Mumbai, we have left over how much greenery? As a zero. Is government of Maharashtra working on it? Meeting. अगर आदित्य ठाकरे जैसा अगर हमारा मिनिस्टर है, उस भाई साहब ने तो पेंगुइन को भी नहीं छोड़ा. पेंगुइन को बोला तुझे मुंबई में रहना, पेंगुइन नीचे लिख रहा मला सोडू दे, नहीं रहना पड़ेगा. Out of 6 penguins, my friend, 2 have already died in that Rani Bagh. बच्चा कुछ बेचारा गरीब की तरह पानी में डुबकी लगा के रहा. He has spent close to 9.5 crores to get that penguins from Antarctica to Mumbai. अरे तू खानदानी राइट है, इसका मतलब तू पेंगुइन के साथ बदला लेगा. You are not allowed to take any pictures and videos. My friend very skeptically, I don't know how did they do. उसने पूरा वीडियोस ही ले लिया. पेंगुइन बेचारा इतना ही लल्लू जैसे दिखता है. And penguin cannot live in Mumbai. ठाकरे बोले तो रह सकता है. मेरा बापू का परिचय. I remember when this Bala Sahib Thackeray का death हुआ था. Somebody told me that Toronto University you got a politician son study. politician के साथ इधर क्या कर सकते हैं? फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा ये आदित्य ठाकरे उधर ही पढ़ता था टोरंटो. मैंने तो कभी जिंदगी में देखा नहीं. Where वो ये स्टडी काम कर रहा है. पूरी नेम चेक के लिए एंजॉय कर रहा. What is the ways of forest conservation? Point number 1. लिखो. Parallel story चालू है. Career guidance. ये इसका तो करियर बना ले, तुझे गाइड करनी. Point number 1, write down. Afforestation on a nationwide basis. Afforestation on a nationwide basis. Afforestation on a nationwide basis. Second. Basis. Second point. Strict penalties or punishments. Strict penalties or punishments for deforestation.
against deforestation, sorry, against deforestation. Strict penalties or punishment against deforestation. Next. अरे वो था सर्किल नहीं दिखा protection of forest. He is minutely doing something and he is putting his mouth into that. What did I say? Protection of forest by establishing RF. What is RF? Reserved forest. Protected forest. RF. Reserved protected forest by strict government initiatives. By strict government initiatives. Next. Yeah. By strict government initiatives. INTIATIVES initiatives. Yes, yes. Yes, yes, to prevent forest firewood cutting. To prevent forest firewood cutting. Firewood के लिए जो forest को हम लोग cut करते हैं. To prevent forest firewood cutting dash alternative sources of energy which are renewable in nature. Alternative sources of energy which are renewable in nature. I'm switching off the alternative sources of energy. Inside the bracket, you can write tidal. Alternative sources of energy, tidal, wind, etc. Next. Establishment of National Forest Policy. Establishment of National Forest Policy with main target, creation of sustainable forests. Creation of sustainable forests. Along with ये एक बार आया था बोर्ड में JFM full form लिखो Joint Forest Management. Joint Forest Management. Establishment of JFM. Joint Forest Management. Most important. Creating awareness. Most important, creating awareness amongst the masses. Creating awareness amongst the masses. Change the paragraph. अभी एक क्वेश्चन है which I am giving, but it is there in page number. You only write. I'll just explain if you need. Then that is the end of the chapter. List out the main objectives of. List out the main objectives of. National Forest Policy. List out. Very important. Huh? National Forest Policy of 1952. ब्रैकेट में डाल दो 1988. मतलब ये दोबारा एक बार चेंज हुआ 1988. एग्जाम में आएगा ना सेम है 52 है बट इसको फिर से लोग ने मॉडिफाई किया. इट्स ऑन पेज नंबर 174. डोंट एग्जैक्टली कॉपी.
try to give a short form of that. Then meantime, we will start the new chapter. उधर है देखना directly save करो. I'll try to show you that national forest policy. Yes. Oh, give the volume here. It's sorry. I will never take it. Why this company is talking so bad? These three stooges. I've given page number also. I've told you. मैंने बोला Needs to be caught by the police. He's a Why is that? तुमको नहीं समझ रहे. Where is the tourist? He is a German national, not in India, and the better note. Welcome to the आधा घंटा ये देख के I'm coming around. अरे national forest policy का objective लिखना है. Last page है chapter का. Look at these, man. Why people are not writing now? Come on. पहले pause कर. Pause कर. It's okay. It's okay. Now share it with it. Hey guys. Go. Answer. Sit up. 174. Yeah guys, watch this video. Boys, hey. Just leave it go. Keep it. Understand? ऊपर वाला वो तुझे पुल करके ऊपर छोड़ेगा तो अपने आप ही make it up. अरे वो That is 1998 and 2008. Which one you are writing? What does Harvard now is Give it a half. Hey, listen.
Hey guys, look at what the government says. Whatever this draft for the national policy, it is India which is doing very casually. But certain developed countries like America put very strict fines. And what is that they call it? I also forget. Some social forestry का एक नया program है, where they get into these jungles which are not properly there. They cut the trees, make the jungles clear, and line wise वो लोग करते हैं. And government gives a very high priority to such governments. That recycle energy मैंने बोला ना, America is the only country in the world next to China which can capture this lightning. I'm not saying thunder, lightning, and उससे भी लोग electricity बना. So what kind of technology to catch a lightning and take it? They say very quick and very less time they can generate light. But in India, it is, we are also doing it. I'm not saying we're not doing, but at least there are certain things. They say if you remember artificial rain, उसको हम लोग cloud seedings बोलते हैं. ये technology China ने develop किया था. And they gave it to this Abu Dhabi, UAE. UAE में जो बाढ़ आया था ना, because of this cloud seeding. So India requested to China to share the technology when under this Kejriwal the plan there was a lot of pollution in Delhi, but China rejected it flatly. वो तो दूर की बात है. अभी हमारा एक this plane, what is that? Indigo only, which was flying on the lines of the J&K, had gone through some tumbling effects. So it wanted Pakistan airspace to facilitate them to land the plane. Pakistan rejected. Okay, so there are some mutual understanding between certain countries. Our neighbors only don't help us. How do I expect America to come and save if China attacks the small country? Which country? अभी China ने लिख के दिया है 2027 China will be attacking and will be taking Taiwan to its place. अभी ये 2 साल निकालो, but then again America, China, I don't know, Pakistan तब तक मैप में है या अंदर उधर जाता है, we do not know. But India will also be engulfed into it because India के लिए भी China सर दर्द दे रहा है. Now it is capturing one place of Bangladesh. That is what I was listening in news. अगर वो place अगर बांग्लादेश में बेच दिया, it is easy for China to make a national airport of just one fighter jet plane. And वहाँ से वो डांगरीला करके कोई तो जगह है बांग्लादेश में. So India is making the pearl of necklace and they are making some queen of necklace to get out India and get out China. Lots and lots of political programs are happening. So we very soon see map of India coming with a new shape, definitely including little bit of POK and बाकी का भी है वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा. Okay, चलो, let us get into the main chapter. New chapter. Put the heading. I'm starting the same. Anybody have volume number 3? I don't want to waste the time. 45 minutes per day. Very happy this time portions are running like in 3 very soon. For the new chapter. Write down water resources in your notebook. मैं कर रहा हूँ. Write down new chapter, everyone. Water resources. Write the introduction part. वो board भी share कर. Advance में जाके share. Second camera. Second camera. वही है. What issue? Nothing going to happen. We will not enter into Pakistan. Right now, introduction part. First, you write main sources. Oh, pass it here. Main sources. Main source. Water, one of the main component. Can I say component? One of the main component of life on the earth.
one of the main component of life on the earth. Next. Life on the earth. 97% of the earth, 97% of the earth is occupied by ocean water. And less than 1% is fresh water. And less than, actually 0.98% kuch hai. Less than 1% is the fresh water. Next. This emphasizes more importance and conservation of fresh water source. More important than conservation of fresh water source. One more sentence. Increasing level of water pollution ensures to protect against the problem of water scarcity. The problem of water scarcity or scarcity, whichever it is. We'll put a subheading and then we will explain. Need for water conservation. Need for water conservation. Okay, after looking at the statistics, what do you feel? Are you involved in saving water or wasting the water? Sure. So today onwards, what's the best thing you can tell to your parents and yourself? जब जरूरत नहीं है पानी को बंद करो. Are we doing that? 90% of the people say, 24 hours का पानी नहीं आता. Why? The building is there. Now I remember certain buildings are having water stoppage when there is heavy rainfall. मतलब हम लोग विंडो से देखते हैं इतना रेनफॉल गिरता है और घर में हमारे नल में पानी पानी. What a tragedy it is. As if you are traveling in a sea and you do not have drinking water. Can we drink the sea water? User आपको जो बोलता है. So देखो, for a country like India, this is very important. What is very important? Save the water. How much percent we have fresh water? Hardly 1%. And you and me living in a city where NMMC or BMMC gives you at least water supply. You travel to certain parts of our own Maharashtra. I think Marathwada region or Karad. Drinking water is a real, is it so? Drinking water is a real facility, facility. Because there is no rainfall. And how much the government can do. But then when I teach this chapter, I make it very simple. Sir, I don't know about my other section of the building, but Hamara flat, Hamara section, wherever possible, we reduce the water wastage. Never allow the watchman or security fellow. How does my building fellow does it? Morning mein dekhega pura building mein pani chal. He's busy washing all the cars. पहले वो टैप डालकर डायरेक्टली कार को सर्दी आने तक छोड़ देता था पानी कार के सर के ऊपर. अभी हम लोग ने बोला नहीं. He takes it in 1 or 2 small buckets and he very neatly wipes it. हमारे घर में whatever that we wash the fruits and vegetables,
We don't throw that water. We throw it on the plants. Throw matlab we go through the plant. And our washing machine, generally, nowadays it is automatic. That the soap water is automatically sucked out. But there was a time that we used to use that soap water for cleaning our cars only. एक तो soap ही है, plus वो car का वो क्या बोलते हैं, concentrate की जरूरत नहीं. सर इतना कंजूसी क्यों करो? इसको कंजूसी नहीं बोलता है. I'm saving water. I don't know, you might have traveled by BST buses or not. Every bus will have some, notings or some. उसमें लिखा रहेगा, बूंद बूंद से बनता है सागर. उसने बोला नहीं कौन सा बूंद से बनता है सागर. हमारा सागर को अगर देखें, it is not a सागर, it is a creek. Have you seen वाशी creek? उसमें आज तक मैंने कभी वेव या टाइड्स देखा ही नहीं है. कैसे देखेगा? हमारा जो मेन अरेबियन सी गेट ऑफ इंडिया का वहां से कट ऑफ हो गया. You go to what's that वाशी एरिया मिनी सी शोर, उधर भी अभी पानी आता है when there is high tide. One, that girl was sitting poses do good. Second, you are calling her. She is calling her. What is that? 3. Stretching. Then what? If it is any fitness, I'm saying you're putting the leg out and sitting. What happens? Write down the next heading. Need for water conservation. Need for water conservation. Hey, will you write on your own? Yes, sir. Yes, sir. नहीं ये लिख दो बाकी है. ये थोड़ा सा 2 ही पॉइंट में दे देता हूँ. Write down. Point number 1. Need for water conservation. Over exploitation of fresh water in agriculture and industries. In agriculture and industries. Second point. Industrialization and urbanization process. Industrialization. Any spelling you need, check with me. And urbanization process on a large scale. In a rapid way, whatever you write. Next. Increasing level of water pollution and high rates of evaporation. Increasing level of water pollution and high rates of evaporation. So, evaporation. And we will write the question, answer we will read and mark in the volume. Okay. Write the next question. Explain the mechanism of RH. What is RH? Rainwater harvesting. Explain the mechanism or working of RH. तो आपका आंसर पहला स्टार्ट होगा. You write page number 2 of volume 3. That's enough. But before to that, let me explain. So we are living in a city where every building has a terrace. And during rainfall time, this terrace water, if you very carefully observe, either it joins the nearby gutter or it is just flooding my building. So what is government is saying today, at least wherever this rainfall is good, try to go for RH. क्या करता है RH में? We connect the terrace with a pipe to nearest small pit I dug. I मतलब government करके देता है. So whatever that excess water, instead of joining the local gutter, where it will go? It will go underground. So इसका दो objective है. One, we are saving the flooding of water. Second, we are saving the water for future. Are you spending too much of a money for RH? क्या सर बिल्डिंग का टेरेस से पाइप ही तो ज्वाइन करना है.
I mean, certain buildings or certain areas in Maharashtra, they say this is a viable alternative. What is viable? Cheap. For what? Dam construction. Can I compare dam construction with RS? Where to nature sector, but at least I can collect water. Where? The terrace water. Is it fresh water or is it a salt water? Fresh water. I've gone into deeper parts of Maharashtra when this rainwater comes, the second rainwater, they collect it and they store it in their house. And 90% of the drinking water they use it this only. तो बोले ये पानी इतना रखे बोलते सर अगला 6 महीने इतना यही पानी हाँ बिकॉज उनका कुआं जो ट्यूबवेल है वो थोड़ा सा सॉल्ट वाटर एंड नॉट ओनली इन इंडिया very few foreign countries have understood that rain has to be safe. And if you go to Singapore, a country, which is a small red dot on a map, sorry to say, वो country के पास कोई भी natural resources नहीं है, कुछ भी नहीं. Then also that country is such a hardworking people. 2045 तक उन्होंने मलेशिया से agreement किया drinking water facility. But one of my brother, many of my family members are there. He says Singapore has collected fresh water up till 2060. So, who's a country? उनका planning कितना? Till date, I heard only one terrorist found to be caught by Singapore police who has kept a bomb and trying to escape. There is an area called Tuas. Tuas करके border area between Singapore and Malaysia. Before he could escape, he was shot dead then and there. And bomb was also recovered. So the police, the rules, the regulations are absolutely strict. If you know that that is the only country where chewing gums or bubble gums are not allowed. And loitering over the roadside and हमारा जैसा fresh water bathroom अगर बाहर use किया $150 spot fine they check it. And all your students, those who are enjoying life and military ये नहीं करता military वो नहीं करता after your 10th standard 2 years of full-time NS. Even the girls are not paid. National service. आपको फिर 2 साल वो धूप में भागने का फिर और प्रैक्टिस करने के बाद फिर बोलते सर आर्मी है सर वरना तो मेरा सर्टिफिकेट और हम इधर we are fighting on the borders and ये बच्चा पूछता सर आज आईपीएल का स्कोर क्या हुआ अरे तो बात छोड़ो सर वो क्या हुआ. And to be very frank, what they say, less of the money, what India has achieved in ISRO. You know what is ISRO? What is ISRO? IPL का advertisement cost, forget about the other costs, which is close to 2,000 crores. हमारा एक रॉकेट स्पेस में जाके लॉन्च होने के लिए 250 crores लगता है बस. सोचा हमारे साइंटिस्ट जो दिन रात काम करते हैं उनको कितना पैसा मिलता है. India is the only country where rocket was carried on a bullock cart. और अब्दुल कलाम का फोटो है उसमें बहुत जवान अब्दुल कलाम दिखे एंड जो उसका जो नोज है ना वो बाइसाइकिल में रख के चला के जाए. तो आत्मकथा ऑफ अ रॉकेट वो लिख रहा है मैं उड़ने वाला था स्पेस में पर मुझे पुर्जा में लिख रहा है बैलगाड़ी. हाँ विक्रम साराभाई द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इंडिया could have it in India. He is the person who launched this ISRO. And what India has achieved in so many years now, what China didn't achieve, what Russia didn't achieve. Before India could land it on that moon, Russia sent one rocket also. Did you know that? But Russia का जो satellite है वो launch नहीं हुआ. Because Russia doesn't want India to become that. वो जो आप लोग देखा, you remember 3 years before that. I think we were teaching in UP only. Nanabol sir ने बोला सारे branch में उसको live बता. And I was in Koperkena, I still remember. And that when that satellite was launching that counting, all the branches of UP made the students to watch it. And it was a proud moment for every Indian. Remember? I think Modi ji, Chandrayaan, that is the only satellite which is launched on the north pole of the moon. Sorry, south pole. Because they say only 14 days के लिए sunlight है, उसके बाद 6 महीना तक ठंडा, and the temperature drops -210 something. And हमारा वो बेचारा इतना सा जो lander and rover है, properly land हुआ. China has tried 4 times, failure. So it is you and me who make up the nation. At least you and me can strive for which future? Our water.
So why water is so important? Sir, आप कभी राजस्थान में कभी जाके रुकना. The ladies are walking a miles to get one pitch of water, and they really know the taste of water. What you and me? That Bisleri ad, I really feel funny. Camels को भी मालूम है Bisleri क्या है. ये कौन सा ad आइडिया है ना? But आपको और मुझे मालूम नहीं है water conservation क्या है. तो आप camel से पूछो ना, ad में तो camel ही है, right? So with the best thing that Maharashtra is doing, we are bringing this RH program. I think Sachin का नाम बार-बार कभी-कभी मैं लेता हूँ. He is the first cricketer who has constructed the new house with rainwater harvest. मतलब जितना भी उसका जो रूट्स है ना, पूरा पानी वेस्ट नहीं जाता है. It's made the water to circulate. तो अगर हर एक बिल्डिंग, हर एक हाउस अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा, definitely India might become prosperous, at least with water. Do we have Ganges? Yes. Do we have Yamuna? अभी हम लोगों ने मैप किया. Despite that, अगर हमको अगर water scarcity आएगा, there's a foolishness of whom? We the people. So look at the question. The answer is on page number. What is that? 2. पहला उसका मीनिंग लिखना, वो मैं देता हूँ. बाकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टली आप कॉपी कर दो. मीनिंग ऑफ RH. वॉल्यूम वाला नहीं दे रहा हूँ, मैं नया दे रहा हूँ. आई एम गिविंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग राइट नाउ. A viable alternative. VIABL. RH is a viable alternative. Viable मतलब cheap. Am I writing? RH is a viable alternative for rainwater for dam construction. So, in India. Full stop. It simply means collecting the excess rainwater and storing the same underground and storing underground. To be used during dry season and storing underground to be used during dry season. Exam में एक बार क्वेश्चन आया था that the winter is a dry season. True or false? True है. Winter का dry season. हाँ, जब भी ड्राई सीजन रहेगा अभी ब्रैकेट में लिखो समर एंड विंटर, क्योंकि विंटर में इंडिया में रेनफॉल नहीं होता है, स्पेशली ओनली 2 जगह छोड़ के बाकी सब जगह ड्राई रहता है. बाकी सब कॉपी करो. ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है. A no talking should be there. That is why I don't allow you to write. And the next part also I'll get ready. Don't have the volume, borrow it from me. Everyone is having a volume, is there? फिर मैं दे दूं फटाफट. चलो लिख दो. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Point number 1, objectives. Rising population, rising demand for water. Rising population, rise in नहीं है, rising, ing, rising demand for water. Next. Rising population. For water. Rapid decrease
of underground water. Rapid decrease of underground water. Next. Increased use in agriculture. Increased use in agriculture, especially after Green Revolution. Especially after Green Revolution. Next. Increasing level of water pollution. Increasing level of water pollution. The last point. To reduce the over dependency on rainfall. Careful. Reduce the over dependency on rainfall. The textbook also you guys not having? Textbooks some people are having. ठीक है मत open करना. Only write the heading. I will discuss and I will show you some videos. The next heading लिखना importance of RH. Importance of RH. Next. Importance of RH. पहला point लिखो. Cheaper alternative. Next. Easy to implement. Next. Highly efficient. Next. Controls or checks. Check or checks. The flooding of residential areas. ये सारा पानी अंडरग्राउंड में जाता है. Next. A prime source of prime मतलब main water filtration underground. Water filter कैसे करता है ये? Every year हम लोग fresh water add करते हैं by adding fresh water every year. एक काम करो. Now keep your notebooks inside your bags. Be relaxed. I'll pass this volume to 1 or 2 persons who will read. You will just fresh water every year. How many are having this volume number 3, 1, 2? So उधर जरूरत नहीं ना. Then keep the volumes outside. Notebooks अंदर रख देना. Because this is not a very big topic to be, You have. Keep the volume here. Page number 3, there is practice of rainwater. फिर irrigation मुझे explain करना है. And okay, come on. You are having, what is his name? That last point. You are having the volume. With the hand raised, मैं देखा. क्यों good बोल रहे हैं? नहीं, I'm asking you to only read. Lazy bell. इधर मैं इसके पास था.
Page number 2 is reading a small paragraph called practice of rainwater harvesting. Anybody needs, you keep it with me. इधर है? उधर नहीं है? हाँ, चलो, you just listen. हाँ, rainwater harvesting. Yeah. He is reading it, come on, listen. Let's see how many are silently listening. And they are only going to answer. I'm not going to answer. Practices of rainwater harvesting in India. Water has been harvested in India since ancient times. Many water harvesting structures and water conserving mechanisms were followed in each region of the country. People harvested water by collecting water from the rooftops and storing it in tanks built in the courtyards. From open community lands, they collected rainwater and stored it in artificial wells. They harvested the rainwater runoff by capturing water from golden streams during the rainy season and storing it in artificial water bottles. The storing mechanism of water receptacle container was known by different names. Artery or pool, Western Himalayas, Bowlies or Thales. These Gangetic. Okay, those are that person. Read the next para. Okay. Next para. He has to read He has to read irrigation. Now wait, before you start irrigation, exam में एक ही type का question आता है ये chapter से irrigation का. We have modern methods of irrigation and we have traditional method of irrigation. Now, what is irrigation according to you? How will you write? Come on, what is an irrigation? If you have seen any dam site, I'll just show you a very rough picture. This is that wall. We call it as embankment. This is that reservoir. Correct? And the last one, reservoir ke saath, we have the gates, which we call as floodgates. And then these are canals. Canals, we said we have drawn from where? From the dam sites connecting the villages. So आजकल हम लोग इसको cemented gutters भी बोलते हैं. Dam might be 7 or 9 kilometers away, but the village is very far. But we are bringing water. What is the advantage of a dam? So not only it stores the water, it will save us from which problem? Flooding. And जब आपको जरूरत है, you can open the floodgates and you can get. So where farmers used to grow only one crop in a year, but the dams we are able to grow 2 crops in a year or more than 2. But like if you remember Kosi Dam, did I say? We have now already, there was some trouble. I said Kosi was not a very calm river. But then dam's height was not very high. Because corruptions, Bihar is known as the second hell of the world. ऐसा है, any Biharis here? मेरे कुछ फ्रेंड्स है उधर उस कॉलेज में सर एक बिहारी सब पे पारी हाँ ये मैं कहा दिया हाँ फिर हम लोग बोलते हैं दुनिया को बर्बाद करने में इनका ही हाथ है पहला एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी इंडिविजुअल they say even during historical times na Bihar was known as Magadhan Empire Magadhan and पूरा हिस्ट्री में Magadhan Empire का बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है चंद्रगुप्ता द मौर्य उसका मेन हेडक्वार्टर्स ही बिहार ही था तू था ना वेकेशन में कहीं तो गया था यूली अच्छा दैट इज अ डिफरेंट बात तो अभी मैं डैम्स के बारे में एक ही एडवांटेज बोलता हूँ द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज ह्यूज but then it has its own advantage. Have you seen how is the dam construction done? Did I show you any video? Boy, just reduce it. It's world's largest or the biggest dam. India का भी है, but you will get it that China dam only. हाँ, उधर ही जा, इधर जा. Chairman, हाँ, उधर लिख, put a head. Dam construction. You see this bridge, dam, how it is difficult. India में भी किया है. कंस्ट्रक्शन बस आया नहीं listen and understand what is this वो ब्लॉक कर वो देखो हाँ wait look at the girls mentality quickly बोलता ऐड ही खत्म हो जाता
And watch it very carefully. Yeah, this is China. वो बोलता है इसका जो length है ना, मैं बाद में बताता हूँ. Dams are one of the ways we control the transmission. It's okay. दूसरा बार दिखा. Generate electricity. This is the world's largest hydropower dam, the Three Gorges Dam in China. When it was built, it flooded the total area of more than 156,000 acres of land with 42 billion tons of water. The sheer amount of water was enough to alter the Earth's rotation by an estimated 0.06 microseconds. So in spite of their extraordinary size and capacity, how are dams built? Dams are usually built between a water source such as a river and a valley. The valley is later converted into a reservoir or an artificial lake using either water redirected from its natural source or elsewhere. Rivers are diverted using tunnels along the side of the dam or its foundations. During the construction of these channels, soil is excavated and larger rocks are blasted with explosives to clear them out of the water. For dams built across large flowing rivers, simply constructing channels to divert the water supply won't be enough. Instead, dams hoping to divert large rivers utilize dry construction pits built on one side of the river. The dam construction then proceeds in stages, where water is allowed to pass through openings in completed portions of the dam. The reservoir can then be filled. Dams are either built on soil or rock foundations, depending on the type of dam and how much water it is intended to support. The foundation must be rigid and strong enough to support both the weight of the dam itself and withstand the water pressure exerted on it. Since foundations are built below the ground, pockets of soft soil or rock are sometimes found during construction. They're replaced right away with stronger materials to ensure the dam's foundations are as sturdy as possible. Then any fissures or cracks are filled up right away with grout to prevent water from leaking out once the dam is complete. Going on to building the dam itself, you might be wondering where all the concrete comes from. For most dam construction projects, concrete batching plants are built on site. This gives workers access to large quantities of ready-to-use concrete, which is transported to the construction site using either a system of conveyor belts or via trucks and cranes. This concrete is then poured into a mold made in the required shape of the dam. Mold is built up in layers, 3 to 6 feet high. After the dam is built, its reservoir can then be properly filled up. It can take several years for the process to happen either naturally or with the help of pumping units. At this point, the water level behind the dam must not be at operational levels. The dam has to be tested first. Once construction is complete, engineers use the first filling as an opportunity to test the dam and see if it will hold. They closely monitor the filling to look for any deficiencies in the dam's design or construction and safely address them. Inspectors check for signs of seepage, cracking, or erosion. Repairs can be made to get the dam performing to its intended capacity. Dams are split into 2 categories, low hazard and high hazard. This refers to the amount of damage it would inflict on its immediate surroundings if the dam fails. Dams also feature components specifically designed for safety, such as emergency spillways during extreme events, including excessive. Rainfall or tornado. Massive volumes of water spill through and are diverted downstream in a controlled flow, ensuring the main dam structure does not need to withstand the additional water pressure. Dams need to stand the test of time, so they're never truly finished. Changing water level. Let it be. Now play. Okay. Come down. Done. Look what India has done soon after independence. Bakranangal, Damodar, Hirakud.
This is reservoir. You know. Kerala, what is this Kerala? Idiki, that's a place. Go back, go back. Now we have go back. Skip suggests. और बैक जाना अरे बाबा वो एरो मत बचा स्क्रॉल डाउन wait go down they will all watch the time and then they will ask you to play so जा नीचे जा Sir, 11 minutes to do. अरे रुक जा Sir, Indra sir, play this one 20 Irakud हाँ दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है I often get my hands over the phone. good now you've learned the play मोबाइल में हो सकता हाँ बस 20 मिनट WIQIS. प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन के बाद उस रीजन का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाता है। इन प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ खास होता है। वो लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं और वो पहली बार उस पैमाने पर बन रहे होते हैं जैसा पहले कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता, जैसे आईफिल टावर, हूवर डैम, बुर्ज खलीफा एक्सेट्रा जैसे प्रोजेक्ट्स। अब इन प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है कि इनसे बड़े ऊंचे या महंगे प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं बनाए गए, पर जब इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था उस वक्त इन प्रोजेक्ट्स ने दुनिया की नजर अपनी ओर खींची थी। आज हम ऐसे ही प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये है हीराकुड डैम। रिवर महानदी पर बना ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है जो करीब 4.8 किलोमीटर लंबा है। भारत की आजादी के बाद बनने वाले मेजर प्रोजेक्ट्स में से एक ये डैम है जो उड़ीसा में सिचुएटेड है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लेड की गई सरकार में हुए मेजर कंस्ट्रक्शंस में से एक ये डैम को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्टडी आई की यूपीएससी प्री प्लस मेंस की फुली लाइव बैच को बेहतरीन सपोर्ट देने के लिए आप सबका शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है लाइव क्लासेस की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हुई थी और इस लाइव बैच में लास्ट की कुछ सीट्स बची हुई हैं। पिछले कुछ वक्त से इस बैच के कुछ शानदार फीचर्स आपको लगातार बताए जा रहे हैं, जैसे 1-to-1 मेंटरशिप, इससे रिलेटेड एंड क्लिप्स में आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं।
Yeah, this is that man at the dangerous vision. आज का भारत एक सदी पुराने भारत से अलग है। ये भारत एक वैज्ञानिक सोच वाला सोशल साइंटिस्ट की मेहनत से बना इनोवेटिव यंगस्टर्स की लगन का नतीजा है, जो पहले ऐसा नहीं था। आज भारत वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17% कंट्रीब्यूट करता है। ये दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। 75 इयर्स पहले इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त की। करीब 200 साल तक चले डिस्पोटिक ब्रिटिश रूल ने इंडिया को एक गरीब, डिपेंडेंट, अंडर डेवलप्ड, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नेशन बनाकर छोड़ा था। इंडिया 1947 में होपलेसली गरीब था। ये ब्रिटेन के लगातार किए गए डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा था। 1/6 इंडिया से भी कम लोग पढ़े लिखे थे। ऐसे में एक्सट्रीम पॉवर्टी और सोशल डिफरेंसेस के कारण इंडिया के सर्वाइवल पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। कैम्ब्रिज के हिस्टोरियंस ऑगस्ट मेडिसन के काम बताते हैं कि इंडिया का ग्लोबल इनकम में शेयर 1700 में 22.6% था, जो कम होते होते ब्रिटिश राज में इतना कम हुआ कि 1952 में ये शेयर केवल 3.8% रह गया। मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कुछ फोकस एरियाज डिसाइड हुए। कई इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पावर कंजम्पशन को देखते हुए कुछ मेजर प्रोजेक्ट भी शुरू किए। न्यूक्लियर पावर एक अलग डायमेंशन था, लेकिन उस पर भी काम तुरंत शुरू हुआ। इन्हीं सब में हीराकुड डैम भी मेजर प्रोजेक्ट था। हालांकि उस वक्त भारत की पॉपुलेशन आज की तुलना में काफी कम थी, लेकिन केवल पॉपुलेशन ही पावर कंजम्पशन का एकमात्र फैक्टर नहीं होता है। उस वक्त रैपिड डेवलपमेंट एक नेसेसिटी बन गया था। नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इंटरनेशनली भी इंडिया को ग्रो करना। इंडिया हमेशा से एक एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है। ऐसे में फार्मिंग सेक्टर को इरिगेशन और प्रोडक्शन एनहांसमेंट की जरूरत थी। किसानों का वेलफेयर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। इसके सॉल्यूशन के रूप में डैम्स और उनसे निकलने वाली कैनाल्स क्रूशियल स्टेप्स और टर्निंग पॉइंट रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, हाउसहोल्ड, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पावर कंजम्पशन हो रहा था। इसलिए पावर जनरेशन में भी हीराकुड डैम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगले सेगमेंट में हम हीराकुड डैम के स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालते हैं। रिवर महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम बना हुआ हीराकुड डैम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। हालांकि इस प्रोजेक्ट का आइडिया इंडिपेंडेंस के पहले से ही डिस्कशन और प्रपोजल स्टेज पर था। 1937 के हाई फ्लड्स के बाद इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने महानदी बेसिन में एक स्टोरेज रिजर्वायर बनाकर महानदी डेल्टा में होने वाले फ्लड्स को रोकने का प्रपोजल दिया था। बाद में 1945 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में ये डिसाइड हुआ कि महानदी के फ्रूटफुली और एक्सपीडिशनली मल्टीपर्पज यूज के लिए इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। उस वक्त सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन और नेविगेशन कमीशन ने इस काम का जिम्मा अपने हाथों में लिया। मार्च 15, 1946 को उस वक्त उड़ीसा के गवर्नर सर हॉथोर्न लुइस ने हीराकुड डैम का फाउंडेशन स्टोन रखा। इस प्रोजेक्ट में मेन डैम की लेंथ 4.8 किलोमीटर है, जो लामडुंगरी हिल्स और चांदी डुंगरी हिल्स के बीच बना हुआ है। डैम के दोनों तरफ करीब 21 किलोमीटर लॉन्ग अर्थिंग डाइक्स बनाई गई हैं। रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट वेबसाइट्स के मुताबिक इसे एशिया का सबसे लंबा डैम माना जाता है, जो ओवरऑल चेक करता है। इससे 1,59,106 हेक्टेयर की खरीफ की फसल और 1,08,385 हेक्टेयर की रबी की फसल का इरिगेशन किया जाता है, जो संबलपुर, बारगढ़, बोलंगी और सुवर्णापुर जैसे जिलों तक फैली जमीन पर उगाई जाती है। ये प्रोजेक्ट फॉर्मली हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर द्वारा फरवरी 1957 को इनॉग्रेट किया गया था। उस वक्त इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब ₹100 करोड़ थी। इसे यदि इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करके देखा जाए तो आज इसकी कीमत 8,000 करोड़ से 8,400 करोड़ के बीच संभावित है। प्रोजेक्ट डुअल पर्पस डैम था, जिसमें इरिगेशन और पावर जनरेशन दोनों ऑब्जेक्टिव शामिल थे। इस डैम ने प्रोग्रेसिवली इरिगेशन और पावर जनरेशन 1956 में शुरू किया, लेकिन फुल पोटेंशियल 1966 तक अचीव हुआ। ये डैम एक कॉम्पोजिट अर्थन स्ट्रक्चर है, जो कंक्रीट और मैसनरी से बना हुआ है। हीराकुड डैम की टेक्निकल साउंडनेस और फिजिबिलिटी को सुपरवाइज करने और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मजूमदार कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ था। इस डैम में 2 ऑब्जर्वेशनल टावर्स हैं, जिनका नाम नेहरू मीनार और गांधी मीनार है।
इस डैम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 359.8 मेगावाट की है, जो इस प्रोजेक्ट के 2 पावर हाउसेस से जनरेट होती है। एक राइट बैंक यानी बुर्ला नामक जगह पर लोकेटेड है, वहीं दूसरा पावर हाउस 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चिपलमा में लोकेटेड है। ये डैम कटक और पुरी जैसे बड़े शहरों को फ्लड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। What if I tell you this 10 rupees can give you your desired salary instead? जाहिर है कि जब इतना मैसिव प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ेगा ही। रिजर्वायर बनने के बाद सैकड़ों गांव इसके चंगुल में आ जाते हैं। हजारों एकड़ जमीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है। कुछ एरिया तो रिजर्वायर में डूब जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा इलाका गवर्नमेंट के पास होता है, जिसका पब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकती। ऐसा हीराकुद डैम के साथ भी हुआ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एस्टिमेट लगाया गया था कि करीब 168 विलेजेस और 1,35,000 एकड़ लैंड हीराकुद डैम रिजर्वायर में सबमर्ज होंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद सामने आया कि करीब 325 विलेजेस और 1,83,000 एकड़ लैंड इससे करीब। Hey guys, one thing is for sure, just switch it off. Climate removed. Climate test you guys have appeared here. How many were absent when I taught that numericals of climate? All were present, sure. In Topos, I am taking some revision courses every lecture whenever I am doing some live chapters like this. So please bring that extra supplementary book that is given in your school or you might have purchased. How many schools are using that supplementary book? You have purchased that? Topo sheet hai? How about other schools? नहीं वो बुक है ना, वो टोटल ज्योग्राफी का, हाँ बड़ा बुक। अगर आप लोग के पास नहीं है ना, anyway अभी next week onwards we'll be meeting in the evening only. So you please bring that books once in a month. I'll take that book and I'll do some practices which are repeated in the board. जैसे 3R 4R वो आपको याद है मैंने क्या बोला था? What is R stands for there? Relative depth or height. And what is RF? Very in topo representative fraction. How many types of scale do we use? What are they? What distance? Tell me, because this is the revision I am taking and you are unable to tell me. One is linear scale, which is below that map, वो जो दिया है. And map का ना left hand side में ऐसा लिखा रहेगा 1 centimeter is equal to 500 और जो भी है ना, that is what RF stands for. How will you write 1 centimeter on the map represent 500 meters? ना, don't write kilometers and come. 500 kilometers तो पूरा map का बाहर निकल जाएगा. I always feel this topo is a real hustle, but the more you practice, the more you will be scoring marks. Okay. So I'll allow the boys to move now quick. Wait, girls. Let this boys come forward. Nobody standing doing any masti. Straight. Bye bye. If the girls are ready, they can also. Hey boy, jaldi nikalna. He's waiting for someone, I think. उसको क्यों रोक रहे हैं? Now girls move.